maximum height. Next topic is maximum height. Maximum height. So how much is the maximum height? Let us see. The body is projected upward. So what is the initial velocity here, students? What is the initial velocity? Initial velocity is u. And at the maximum height, what is the final velocity? 0. So how much the height it has attained, that height we call it as maximum height, and we are denoting by capital H. Now the body is moving upward. The body is moving upward. That means it is moving away from the earth. Therefore, what I do, I take a as minus g. क्या लेंगे बेटा हम? A as minus g. So this a we can take it as minus g. तो अब इक्वेशन हम यूज करेंगे बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम हाइट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. व्हाट इज दिस v स्क्वायर स्टूडेंट्स? यू कैन सी v इज 0. तो यहाँ पे 0 लेंगे बेटा हम, 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हम ऊपर फेंके हैं बॉडी को, देखो that is 2. What is a beta? A can be written as minus g, so therefore I will take it as minus g. और ये s is the vertical displacement and the vertical displacement I have taken it as h. So यहाँ पे मैं h ले रहा हूँ बेटा. तो ये minus u square is equals to minus 2g h. Minus minus will get cancelled. Try to understand. This minus minus get cancelled. U square is equals to 2gh. So therefore we can write 2g h is equals to u square. So h कितना मिल रहा बेटे हमारे को? h u square by 2g. h is equals to, this is u square by 2g. So from this, two things we are understanding. The first one, the height is proportional to u square. What do you mean by that? When you increase the initial velocity, what happens? Height also increases. हाइट ऑल्सो, मैक्सिमम हाइट ऑल्सो इंक्रीज. ज्यादा वेलोसिटी से जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ना बेटा तो ज्यादा हाइट तक जाएगा वो. और एक चीज, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी. ऐसे प्लैनेट पर जहां पे ग्रेविटी ज्यादा हो, ऐसे प्लैनेट पर जहां पे ग्रेविटी ज्यादा हो, वहां पे मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी? कम रहेगी. और ऐसे प्लैनेट पे जहां पे ग्रेविटी कम हो, वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे देखने को ये मिलेगा बेटा, हाइट ज्यादा ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट इज हैविंग द लेस एबिलिटी टू पुल द बॉडी डाउन, राइट? तो जब ग्रेविटी कम हो जाती है बेटा, द बॉडी कैन रीच द ग्रेटर हाइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर मैक्सिमम हाइट. नाउ लेट अस गो फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज वेलोसिटी ऑन reaching the point of projection. Point of projection. Velocity on reaching the point of projection. क्या है बेटा ये velocity on reaching the point of projection? I hope you have understood what I am like going to explain you. When I have projected the body upward with initial velocity u, the body will go up and it will come down and it will reach the same point. So with how much velocity that body is going to reach the ground, that we are calculating now. I hope it is clear. देखिए बेटा, अब मैं इसको कैसा derive कर रहा हूँ. The body is projected up with how much velocity? u, and it is going up and again it is coming down with how much velocity? I don't know that velocity. Suppose that velocity of reaching the ground, reaching the same point of projection, I consider it as v. With how much velocity I am projecting? u. Suppose I consider its velocity is v while reaching the ground. कितनी है उसकी velocity? v है, और यही v हमारे को कैलकुलेट करना है बेटा हमारे को, ठीक है? तो what I do, I take this equation, you know, v is equals to u plus at. This is v beta. What is this? U, initial velocity. Initial velocity as per the situation it is u only. What is a? A, body is projected upward, so a can be written as minus g. तो अब आप आइए a की जगह पे हम लिखेंगे minus g in place of a. Body is projected upward, so a can be written as minus g. और ये जो टाइम है ना बेटे, ये वाला टाइम जो है ना, the body is going upward and again it is coming down. So which time it is? Time of ascent लेंगे या time of descent लेंगे या time of flight लेंगे? Which time we are going to take? Time of flight we are going to take. Time of flight. Why? Because the body is remaining in air for that much time. So here in place of t, I take time of flight, and the formula for time of flight is how much? 2u by g. Check करिए बेटा, time of flight, it is 2u by g. So therefore, this u
this g and this g get cancelled. So what is this v? V is equal to u, and this is how much, students? Minus 2u. So v is equals to u minus 2u is minus u. क्या मतलब हुआ बेटे, जरा इसको समझेंगे अब हम. What, with how much velocity I have projected? I have projected with an initial velocity u. The body is going upward and reaching the ground, the same point of projection with the velocity v. और ये v क्या आया मेरे को? माइनस यू. माइनस यू, दैट मीन्स माइनस का मतलब बेटे डायरेक्शन चेंज हो गया. यस, डायरेक्शन चेंज हो गया. ऊपर था, अब ये नीचे आ गया, डायरेक्शन चेंज हो गया. और एक चीज, विथ हाउ मच वेलोसिटी इट इज रीचिंग द ग्राउंड? विद द सेम वेलोसिटी u ओनली. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फाइनल वेलोसिटी हमारे को u आया, माइनस क्यों आया? डायरेक्शन रिवर्स हो गया. ऊपर जाते खुद ऊपर, अब आते खुद नीचे. वेलोसिटी इज, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज रिवर्स्ड. तो बेटे जितनी वेलोसिटी से आप बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं उतनी ही वेलोसिटी से बॉडी नीचे आती है. आई रिपीट वंस अगेन, जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे कोई ऑब्जेक्ट को उतनी ही वेलोसिटी से ये नीचे आएगा. लेकिन ये सिचुएशन कब होगा मालूम है? ओनली इन द एब्सेंस ऑफ एयर. इतना एब्सेंस ऑफ एयर. लेकिन अगर जब एयर में कोई बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, जितनी वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करते हैं बेटा, वो नीचे आते आते उसकी पूरी वेलोसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है. वेलोसिटी ऑलमोस्ट जितनी वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करें उतनी वेलोसिटी से नीचे नहीं आती है, बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस को स्टॉप करते 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 स्लोली लेकर आता है. दैट इज व्हाई व्हेन द गनमैन फायर्स द बुलेट, इस तरह से बुलेट फायर करा ना बेटे, अगर वो गनमैन जहां पे बुलेट को फायर करा, वो बुलेट वापस उसके पास आई, तो सेकंड बुलेट नहीं चला सकता उन्हें. समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? तो ऊपर जाने की वेलोसिटी, नीचे आने की वेलोसिटी इन प्रैक्टिकल लाइफ इज टोटली डिफरेंट, बिकॉज we are having an atmosphere where we are having certain different gases. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस विल बी देयर. लेकिन ये जो सिचुएशन हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ एयर हो गया. तो इसी चीज से मैं एक चीज यहाँ पे आपको मैं प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ बेटे, जितनी वेलोसिटी से ये ऊपर गया उतनी ही वेलोसिटी से ये नीचे आया. तो इसके लिए मैं यहाँ पे अच्छे से देखना है आपको कि ये जो मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पॉइंट पे व्हेन इट इज गोइंग अपवर्ड, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी बेटा? u. व्हेन इट इज कमिंग डाउन, डाउन, तो इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी? h. ऑफ कोर्स माइनस u इज देयर. माइनस जस्ट ये बताता बेटे ये ऊपर है तो ये नीचे है, बस उतना ही फर्क है. माइनस का मतलब है डायरेक्शंस रिवर्स हो गए हैं, दोनों के डायरेक्शंस. ठीक है, तो ये दोनों के रिवर्स डायरेक्शंस माइनस. लेकिन जितनी वेलोसिटी से हम ऊपर फेंके उतनी वेलोसिटी से नीचे आया. तो अब मैं ये मान के चलता हूं यहां पर इस पॉइंट पे ऊपर जाते वक्त इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है v1, तो नीचे आते वक्त बेटे उतनी ही रहेंगी वेलोसिटी v1. ऑफ कोर्स माइनस v1 रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं मैं. अगर इस पॉइंट पे ऊपर जाते वक्त बेटा अगर वेलोसिटी v2 है, फिर ये नीचे आते खुद उसकी वेलोसिटी कितनी रहेंगी? v2 ही रहेंगी. सो एट एवरी लेवल, जैसा कि यहाँ u है ना, ये लेवल सेम है, दैट्स व्हाई इट इज u एंड u. ये लेवल भी सेम है बेटा, v1 v1. ये लेवल भी सेम है, v2 v2. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. अभी तक हम जो भी सिचुएशंस देखे हैं बेटा, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी ऑफ रीचिंग द ग्राउंड, एवरीथिंग व्हाटएवर वी हैव सीन विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल वी हैव सीन. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटे, देखिए आप, वर्टिकल प्रोजेक्शन हेडिंग पे आपको पता चल जाएगा व्हाट वी आर डूइंग. Vertical projection from the top of a tower. Vertical projection from the top of a tower. Try to understand what is this vertical projection of the top of a tower. यहाँ पे एक टॉवर है बेटा, just imagine one tower is there or building is there, and from here the top of this tower, from here we are projecting this object, any object, up with an initial velocity u. The height of the tower I take it as h. Height of the tower is h. So what happens, this object will go up and it comes down. ये नीचे आएगा बेटा, ये नीचे 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 आएगा. So in order to come down, ये नीचे आने के लिए some time it will take. कितने टाइम लगा बेटा? यहाँ पे टाइम is, how much is the time? Suppose the time is t. The time taken is how much? T is the time taken. The body is projected upward with initial velocity u. फिर ये नीचे आया, कितने टाइम में नीचे आया? Let us go for which equation we are going to use for in order to calculate ये time.
ये वाला टाइम कैलकुलेट करने के लिए या मैक्सिमम ये हाइट ऑफ द टावर मालूम करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बेटे हम? आप खुद देखिए बाप, आई हैव गिवन यू 4 इक्वेशंस, 5 इक्वेशंस यस्टरडे. S is equals to V is equals to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square, V square minus U square is equals to 2AS, Sn is equals to U plus N minus half into N, the fifth equation, S is equals to U plus V by 2 into T. आप पाई तो मेरे को जस्ट आप 1 2 3 कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे, थोड़ा सा नंबर भी चाहिए. आई एम वेटिंग. डिस्प्लेसमेंट है बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम है. चलिए नाउ मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक्सेप्ट वन हैज रिप्लाइड रॉन्ग. देखिए बेटा कौन सा इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बेटा s क्या लेंगे, what we are going to take s, तो maximum students they will say that sir we can take s as h. okay, I agree, s as h. लेकिन ये h क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव लेंगे. दैट्स व्हाई आई आस्क यू टू गिव वन स्टार मार्क बिकॉज इट इज अ डिफरेंट वन. अब तक हम जो भी बॉडी प्रोजेक्ट करें बेटा ग्राउंड से प्रोजेक्ट करें, ग्राउंड से आ, लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां कुछ हाइट पे से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कहां पे प्रोजेक्ट करें, ऊपर प्रोजेक्ट करें, लेकिन बॉडी जो है ना इस पॉइंट से नीचे जा रही है, इस पॉइंट से भी नीचे जा रही है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे को ये मिलेगा. भाई व्हाट इज द रीजन, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है बेटा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन. तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटे, इट इज h. और ये h जो है ना नीचे है, नीचे है, नीचे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. so therefore I am taking it as minus h. चलिए आइए, this you can write it as ut, a can be written as minus g. why, because the body is projected upward, ऊपर हम प्रोजेक्ट करें बेटा, so therefore a can be written as minus g. so I'll substitute here minus half at square, minus half at square, minus h. why we are taking, we are projecting the body up but the tower is down, that's why h can be written as minus h. that is ut, body is projected upward, that's why a is taken as minus g. यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक डाउट आता है बेटा जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये बॉडी तो प्रोजेक्ट करे ऊपर, फिर ये बॉडी नीचे भी तो आई, नीचे का भी मोशन है, तो प्लस जी क्यों नहीं कंसीडर करें, खाली प्रोजेक्ट करे या ऊपर जा रही है, बल्कि हम माइनस जी लिए, फिर बॉडी नीचे भी तो आ रही है. वाई वी आर नॉट टेकिंग दैट प्लस जी, वाई वी आर नेग्लेक्टिंग दैट सिचुएशन. तो एक बात अच्छे से याद रखिए आप, हम जब प्रोजेक्ट करते हैं ना बॉडी, तो वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे देखते हैं बेटा बॉडी ऊपर फेंके या नीचे फेंके. ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो माइनस जी, नीचे बॉडी जा रही है तो प्लस जी. आप ऊपर प्रोजेक्ट करने के बाद उन्हें ऊपर जाने दो और ऊपर जाने दो या नीचे आने दो, वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट दैट. एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज इफ इट इज अपवर्ड, आप क्या करेंगे, ऊपर जा रही है बॉडी, बॉडी ऊपर जा रही है मतलब बेटा इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, देयरफॉर माइनस जी. जब हम बॉडी को नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, प्लस जी लेंगे. अगर इसी टावर पे ठहरकर अगर हम बॉडी को नीचे फेंकते हैं, देन इन दैट सिचुएशन प्लस जी लेंगे. ये टावर पे ठहर के ऊपर फेंके ना बेटे, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज माइनस जी. जिस पॉइंट से हम फेंक रहे हैं, कहां पे फेंक रहे हैं, एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस माइनस विल बिकम व्हाट, प्लस एच. माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, आई एम मल्टीप्लाइंग द कंप्लीट इक्वेशन बाय नेगेटिव. सो दिस इज व्हाट, माइनस विल बिकम प्लस, this plus will become minus and this minus will become plus half. अच्छा यहाँ पे हमारे को चेंज करना है ना, g लिखना है, a is minus g, so this is minus will become plus. so this is the equation what we need to follow. तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है बेटा तो यहाँ पे आप लिख लेंगे आप मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव, कॉपी कर लीजिए. See student, the first problem, a body is projected vertically up, a body is projected vertically up with a velocity u from a tower. It reaches the ground with velocity nu. The height of the tower is, the height of the tower is, देखिए बेटे बॉडी को प्रोजेक्ट करें हम कितनी वेलोसिटी से, u. जब वो नीचे आई, अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, देखिए विद वन ऑफ द स्टूडेंट वाज हैविंग द डाउट. तो इस ऑब्जेक्ट को हम कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, ऊपर u. लेकिन व्हेन इट इज कमिंग डाउन,
यहाँ पे जब आएंगे ना बेटा, यहाँ पे यू रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब नीचे आ जाएगा तो व्हाट हैपेंस, इसकी वेलोसिटी बढ़ेंगे. सो नाउ द वेलोसिटी इज हाउ मच, एन यू. So initial velocity is u, final velocity is nu. We have to calculate the height of the tower. कितना height होगा tower का, कितना height है, that we need to calculate under this situation. So this is very simple. We know this, v square minus u square is equals to 2as. अब सवाल ये है कि भाई why we are using only this equation. तो बेटा यहाँ पे मेरे से सवाल क्या किया गया, जरा अच्छे से देखिए. h, height of the tower, this is there. Initial velocity is there, final velocity is there. So which is the best equation? So initial velocity you should have, yes. Final velocity we should have, yes. As well as displacement, s is h. And moreover, a will not be given. Vertical motions में acceleration will not be mentioned. Why? Vertical motion के लिए acceleration is nothing but acceleration due to gravity. ठीक है, चलिए आइए बेटा. This is v. This is our v, right? Final velocity. This is our final velocity, v. So final velocity is nu square minus, what is this initial velocity? Initial velocity is u only, u square is equals to 2. What is this a? A is क्या लेंगे हम यहाँ पे, प्लस जी लेंगे या माइनस जी लेंगे? तो बेटा यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर, तो हम करेंगे बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, माइनस जी. अवे फ्रॉम द अर्थ, माइनस जी. नेक्स्ट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, h इज द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन h हम पॉजिटिव h लेंगे या नेगेटिव h लेंगे? तो 100% इस सिचुएशन में हम नेगेटिव h लेंगे. इसके लिए कि भाई बॉडी तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर, टावर है नीचे. सो देयरफॉर दिस हैज टू बी टेकन एज माइनस h. अभी हम कर चुके हैं बेटा ये. तो दिस विल बिकम व्हाट, n स्क्वायर u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. why 2gh? माइनस इंटू माइनस प्लस. नाउ दिस इज 2gh. अभी ये दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, जरा देखिए आप. n स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू स्क्वायर. व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन u स्क्वायर कॉमन. u स्क्वायर आई हैव टेकन कॉमन. सो n स्क्वायर माइनस 1, दिस इज u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. as per the question we need to calculate the height of the tower. So height of the tower h is equals to n square minus 1, ये u स्क्वायर. बेटा ये टर्म आई एम राइटिंग दिस साइड एंड उसको ओमिट करिए. हाँ देखिए बेटा, ये टर्म what I am doing, I am taking this complete term n square minus 1 into u square, the same term, and h I am calculating, so therefore I am taking this 2g in the denominator.